Hi everyone, hi students. Welcome back to Geeks for Geeks. I hope that everyone is good and if just quickly tell me if my screen is visible and if I'm audible to all of you. Yeah, let me see who all are here in the class and then I'll start with the class. Okay, okay, just give me a second, students. Yeah, students. Yeah. So, yeah, let's start with today's class. So, as you can, as you know, that we are going to start with DFS today. So, DFS is basically depth first traversal. So, I'm gonna tell you how you can basically use DFS to traverse a tree. Like, what's the procedure? What's the data structure? Another data structure that we use while we do DFS. Okay. Okay. So let's start with depth first traversal. So depth first traversal or search of a graph is similar to the depth first traversal of a tree. So for the students who have not seen the video of depth first traversal of a tree, just I would request you to please go and watch that video. That will help you in understanding this whole video or this whole algorithm a little bit better. Okay. So let's see what's the catch over here. So the catch over here is that unlike trees, graphs may contain cycles. So as I already told you that inside a graph there may be a cycle, right? There can be a cycle. So if you will see this here, we have a cycle, but in case of trees we never have a cycle. Okay, so that's why we have to do a little, like there's a little bit of difference in DFS of DFS or DFT of trees and DFT of graph. Okay, graphs may contain cycles. A node may be visited twice, so that's because of this you can say that a graph it has a cycle, so that's why any node can be traversed twice. It may be a chance that any node can be traversed twice. Okay, twice we can traverse any node. So to avoid this process, to avoid processing a node more than twice, so we don't want to process any node twice, we use a boolean visited array, where what we do is every node that we visit, we mark that node as visited. Okay, we mark that node as visited. Okay, so that's how we prevent from going processing any node two times. Okay, yeah, let's see the approach for this algorithm. Let's quickly see the approach for this algorithm. Okay. Okay. So the approach for this algorithm, so the depth first search is an algorithm for traversing or searching a tree of graph data structure. So basically we are going to traverse or search any key in a graph data structure using depth first search algorithm. The algorithm starts with the root node. Now again, if you have watched the BFS video, all some concepts will be very clear to you, because I have already told you some few things that we take as a consideration, like that we take as in consideration as default. ठीक है, हम default की तरह उसको consider करते हैं. So because if we have not, like if it is not given that start traversing from a particular node, we will consider any node as our root node. हम किसी भी नोड को रूट नोड कंसिडर करके एंड वहां से ट्रैवर्स करना अपनी ट्री को स्टार्ट कर देंगे, सिलेक्टिंग सम आर्बिट्री नोड एज द रूट नोड इन ईच केस ऑफ ग्राफ एंड एक्सप्लोर्स एज फार एज पॉसिबल अलोंग ईच ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग. सो let me tell you what does this mean, like इस line का मतलब क्या है. So let's just assume that 1 2 3 and 4, this is a tree. So what happens is when I will go on node 1, जब मैं node 1 पे आऊंगी, so I have two other nodes connected, two closest nodes connected to this one. Now in BFS what we did is we first went to 4 and then 2, or first we went to 2 or 4. Basically we traverse both the nodes, closest nodes, right? But in case of DFS, what we'll do is we will only traverse one node. Okay, and if another node is left, we will backtrack and come back to this and then we will traverse. I will explain the whole algorithm in a bit, so it will be like really simple for you to understand, so don't worry there. Okay, so the basic idea is to
start from the root or any arbitrary node, okay, and mark the node and move to the adjacent unmarked node. So always we have to remember, whenever we'll be moving, we have to check if the node on which we are going is not visited, okay. And until this loop, continue this loop until there is no marked adjacent node. So we will continue doing this until we have no marked adjacent node, okay. Now, and then at the end, what we have to do is we are going to backtrack and check if there is any node. So basically I will go from 1 to 4, 4 to 3, 3 to 1, and then I will start backtracking. If for example, just consider that we have another node over here like this, and we have moved something like this, 1 to 4, then 4 to 3, then 3 to 2, then this node is left, this node is left, ये node तो हमारी रह गई है. So what we are going to do is we are going to backtrack का मतलब हम वापस आएंगे, हम 2 से 3 आएंगे. We are going to check कि क्या इससे कनेक्टेड कोई ऐसी नोड है जिसको हमने विजिट नहीं किया है. So in this case we'll come to know yes 5 is the node जो हमने अभी ट्रैवर्स नहीं किए और विजिट नहीं हुई है, एंड वी हैव टू गो टू दिस. सो हम यहाँ से इस पे जाएंगे. सिमिलरली अगर 4 से कोई और नोड अटैच्ड है लाइक 6 एंड यहाँ से 7, सो वी आर गोइंग टू बैक ट्रैक एंड चेक एट ईच एंड एवरी स्टेप कि कोई एक नोड ऐसी रह तो नहीं गई जो अनविजिटेड है, ओके. Now let's see the algorithm for this. So the algorithm for this is we are going to have a recursive function. We are going to do this step recursively that takes the index of the node. We will give index of the node and a visited array. So every time we will give the index of the node, and every time we will pass visited array, because at each and every step we are going to visit one or the other that node, okay. So what we are going to do is mark the current node as visited. So हम जिस भी node पे गए, for example this was the example 1 4 3 2, and we are going to connect, and यहाँ से I'm going to connect 5 and I'm going to connect 6, okay. and yeah, ऐसे मैं इसको भी connect कर देती हूँ, okay. Now what we are going to do is, or let's do one thing, इस वाले को हटा देते हैं, इसको इस वाले connection को हम हटा देते हैं. I'm not going to keep this connection for now, okay. So what we are going to do is, हम यहाँ पे सबसे पहले कौन सा data structure use करते हैं, हम stack data structure use करते हैं, okay. What we are going to do is inside a stack, okay, I'm going to start with the root node. मैं इसको root node consider कर रही हूँ, यहाँ से start कर रही हूँ, okay. Now I will push 1 and I will print 1. ऑर्डर भी मैं बताते जा रही हूँ, मैं 1 प्रिंट कर दूंगी, ठीक है ना. इस एंड यहाँ पे मैं विजिटेड मार्क कर दूंगी, ओके. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सी इसके आजू बाजू कौन सी नोड्स रह गई हैं, कौन सी नोड्स हैं. सो देयर इज 2 एंड देयर इज 4. नाउ दिस इज टोटली माय चॉइस कि मैं कौन सी वाली पे पहले जाऊंगी. दिस इज नॉट फिक्स, आप 2 पे भी जा सकते हैं, 4 पे भी जा सकते हैं. सो अगेन आई विल से कि डीएफएस, जब हम डीएफएस की बात कर रहे हैं तो देयर इज नॉट ओनली वन DFS का पूरा like one DFS traversal. There can be multiple DFS traversal by different combinations, okay. Now one thing more to remember is that breadth first में क्या हो रहा था कि आप breadth के along जा रहे थे. Basically आप इसकी आजू बाजू की दोनों नोड्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, राइट. बट डेप्थ में क्या हो रहा है कि सबसे पहले आप डेप्थ में जाएंगे, ठीक है. सो इसके बाद मान लो मैंने इस वाली नोड पे विजिट किया 4 पे, ओके. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुश 4 इन द स्टैक एंड मैं यहाँ पे 4 प्रिंट कर दूंगी एंड इसको भी विजिटेड मार्क कर दूंगी. देन आई विल गो ऑन 3, ठीक है. सो अगेन मैं 3 प्रिंट करूंगी, 3 को पुश करूंगी एंड 3 को भी विजिटेड मार्क कर दूँ, ठीक है. देन जस्ट 3 के पास 5 और 2 दो ऑप्शन है, बट मान लो अभी 3 की 2 की तरफ जा रहा है, ओके. नाउ अगेन आई विल पुश 2 ओवर हियर एंड 2 को मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगी एंड इसको भी विजिटेड मार्क कर देंगे. नाउ आई विल चेक क्या 2 के आजू बाजू कोई ऐसी नोड है जो विजिटेड नहीं है. नहीं, 2 के आजू बाजू कोई भी ऐसी नोड नहीं है जो विजिटेड नहीं है 2 से कनेक्टेड. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू बैक ट्रैक. नाउ हम 3 पे आएंगे और बैक ट्रैक कैसे करेंगे, हम इसको पॉप करते जाएंगे, हम इसको पॉप कर देंगे इसमें से एंड हम यहाँ पे आ गए 3 पे, ठीक है. नाउ हमारा टॉप 3 पे आ गया. नाउ हम 3 के आजू बाजू देखेंगे, 3 से कोई कनेक्टेड ऐसी नोड है जो विजिट नहीं हुई है. हाँ, 3 से कनेक्टेड एक ऐसी नोड है जो अभी विजिट नहीं हुई है, दैट इज 5. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू गो ऑन 5. हम 5 यहाँ पुश करेंगे, 5 यहाँ प्रिंट करेंगे एंड 5 को विजिटेड मार्क कर देंगे.
देन व्हाट वी आर गोइंग टू सी 5 के साइड में कोई ऐसी नोड है जिसको हमने विजिट नहीं किया है, हाँ 6 ऐसी नोड है जिसको हमने विजिट नहीं किया है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम 6 को पुश करेंगे, 6 को प्रिंट करेंगे एंड 6 पे विजिटेड मार्क कर देंगे। अब जब हम 6 पे पहुंच गए, हम चेक करेंगे क्या 6 के सराउंडिंग में कोई एक ऐसी नोड है जिसको हमने विजिट नहीं किया, नहीं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम बैक ट्रैक करेंगे, हम आएंगे 5 को बैक ट्रैक कैसे करेंगे, इस स्टैक की हेल्प से। बैक ट्रैक करने के लिए हमारे को ये स्टैक हेल्प करेगा। तो हम 6 को रिमूव कर देंगे, 6 के बाद हम कहाँ आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। हम 5 से चेक करेंगे कि 5 से कोई ऐसी नोड कनेक्टेड है जो विजिट नहीं हुई है, नहीं। हम 5 को रिमूव करेंगे, हम कहाँ आ जाएंगे, 3 पे, ठीक है। सो आप देख रहे हो ये ऑटोमेटिकली पाथ किसकी हेल्प से हमारे पास आ जा रहा है, हमारे पास चेक की हेल्प से ये पाथ आ जा रहा है बैक ट्रैकिंग वाला। 3 से हम देखेंगे क्या 3 से कोई ऐसी नोड कनेक्टेड है जो विजिटेड नहीं है, नहीं ऐसी कोई नोड नहीं है। तो हम इसको रिमूव करेंगे, हम कहाँ आ जाएंगे, 4। ऑटोमेटिकली ये पाथ क्रिएट हो रहा है, जो मैं पाथ बना रही हूँ बैक ट्रैकिंग का, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये स्टैक हेल्प कर रहा है आपको। 4 से क्या कोई ऐसी नोड है जो कि अनविजिटेड है और कनेक्टेड है, नहीं। आप कहाँ आ जाओगे, 1 पे ना, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे ना। 1 से क्या कोई ऐसी नोड है जो कनेक्टेड है और विजिटेड नहीं हो, नहीं ऐसी कोई नोड नहीं है। आपने 1 भी रिमूव कर दिया ना, आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गया। जब आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो दैट विल बी द कंडीशन कि आपका पूरा डीएफएस हो गया है, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल आपका पूरा हो चुका है, ठीक है, जब आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। ओके, so let's see the another point. Traverse all the adjacent and unmarked nodes, सारी adjacent और unmarked nodes को हम traverse करेंगे। Call the recursive function with the index of the adjacent node. So हम वापस से recursively adjacent node पे कॉल करते चले जाएंगे अपना फंक्शन। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ पे एक मैंने ग्राफ बना दिया है, सो आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग। यहाँ पे हम स्टैक बनाते हैं, ओके, एंड अपने 1 को हम रूट नोड मानते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना। आपने 1 को स्टैक में डाला, ठीक है, 1 को प्रिंट किया एंड 1 पे विजिटेड मार्क कर दिया, ठीक है ना। आप कहाँ गए, आप गए 2 पे, ठीक है। आपके पास ऑप्शन था 2 और 3। ओके, लेट्स डू वन थिंग, हम 2 पे नहीं जाते हैं इस बार, हम 3 पे जाते हैं, बिकॉज पिछली बार भी हमने यही वाला पूरा रूट अपनाया था। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो ऑन 3, ठीक है। हम यहाँ से 3 पे गए, ठीक है। आपने 3 को पुश किया, 3 को प्रिंट किया एंड यहाँ पे विजिटेड मार्क किया। 3 के पास क्या क्या ऑप्शन है, 3 के पास ऑप्शन है 4 पे जाने का, 6 पे जाने का। लेट्स डू वन थिंग, हम 6 पे चलते हैं, चलो, ठीक है। ये टोटली आपकी चॉइस है, आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। 6 हमने पुश किया, 6 को हमने प्रिंट किया एंड 6 को हमने विजिटेड मार्क कर दिया। नाउ 6 के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, 3, 4, 7। सो 3 तो हमारा विजिटेड था, तो 3 के डायरेक्शन में तो हम नहीं जा सकते। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो 4 या तो 7। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लेट्स गो ऑन 7। हम 7 पे गए, ठीक है। 7 को हमने पुश किया, ठीक है। 7 को हमने यहाँ प्रिंट किया एंड 7 पे हमने विजिटेड मार्क कर दिया। नाउ 7 के पास क्या ऑप्शन है, 7 के पास ऑप्शन है 2 का और 6 का, बस। तो 6 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गो ऑन 2। हम यहाँ से 2 पे जाएंगे, 2 को हमने पुश किया अगेन, 2 को प्रिंट किया एंड 2 को विजिटेड मार्क किया। ओके, नाउ 2 के पास ऑप्शन है 4 का और 5 का एंड 7 का। 7 ऑलरेडी विजिटेड है, तो वी आर नॉट गोइंग टू गो ऑन 7, वी आर ओनली गोइंग टू गो ऑन ईदर 4 और 5। सो वैसे तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड, तो किसी पे भी चले जाओ। सो लेट्स अज्यूम कि हम 5 पे जा रहे हैं, 5 हमने डाला यहाँ पे, 5 हमने प्रिंट किया एंड उसके बाद 5 हमने विजिटेड मार्क कर दिया। ना 5 के पास क्या ऑप्शन है, ओनली 4 इज द ऑप्शन जो कि हमारा विजिटेड नहीं है। सो 5 विल गो वेयर, 5 4 पे जाएगा, 4 हम यहाँ पुश करेंगे, 4 हम प्रिंट करेंगे एंड 4 पे विजिटेड मार्क कर देंगे, ठीक है। 5 से हम 4 आ गए ना। इस पूरे पाथ को जो हमने अभी फॉलो किया, इसको बैक ट्रैक करने के लिए क्या हेल्प करेगा, इसको बैक ट्रैक करने के लिए मेरा ये स्टैक हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम 4 से शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या 4 के सराउंडिंग में कोई ऐसी नोड है जो विजिटेड नहीं हो। तो 4 के सराउंडिंग में कोई भी ऐसी नोड नहीं है जो विजिटेड नहीं है। सो व्हाट, इस केस में हमारा क्या शुरू हो जाएगी, हमारी बैक ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। हम 4 को स्टैक में से रिमूव करेंगे एंड हमारा टॉप यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हम 4 से कहाँ चले गए, हम 4 से कहाँ चले गए, लेट मी चेंज द पेन। हम 4 से 5 की तरफ चले गए, ठीक है ना। 5 से क्या कोई ऐसी नोड कनेक्टेड है जो विजिटेड नहीं हो, नहीं। तो हमारा टॉप कहाँ चले गया, 2 चला गया, ठीक है। हम 5 से 2 पे चले गए।
ना 2 से क्या कोई ऐसी नोड कनेक्टेड है जो विजिटेड नहीं हो? नहीं। 2 से हम कहाँ चले गए? 7 चले गए। ठीक है, क्या 7 से कोई ऐसी नोड कनेक्टेड है जो विजिटेड नहीं हो? नहीं। 7 से हम कहाँ जाएंगे? 6 जाएंगे। ठीक है, क्या 6 से कोई ऐसी नोड कनेक्टेड है जो विजिटेड नहीं हो? नहीं। तो हम 6 से कहाँ जाएंगे? हम 6 से 3 जाएंगे। क्या 3 से कोई ऐसी नोड कनेक्टेड है जो विजिटेड नहीं हो? नहीं। हम 3 से कहाँ जाएंगे? 1। क्या 1 से कोई ऐसी नोड कनेक्टेड है जो विजिटेड नहीं हो? नहीं। हम इसको भी रिमूव करेंगे एंड नाउ आवर स्टैक इज एम्प्टी। जब हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया दैट मीन्स कि हमने इस पूरे ग्राफ को ट्रैवर्स कर लिया। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर सॉरी सॉरी अगर किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो दे कैन आस्क द डाउट एंड आई विल गो इन द मीनवाइल आई विल गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. Now let's see the complexity analysis. So first let's talk about the time complexity. So the time complexity is O of V plus E. Okay. So हमारे पास जितनी वर्टेक्स हैं हम सारी नोड्स पे जा रहे हैं एंड सारी हम एजेस को भी कवर कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई V is the number of vertices and E is the number of edges in the graphs. That's why we have O of V plus E. You remember जब हमने लिस्ट वाला एनालिसिस और मैट्रिक्स वाला एनालिसिस किया था ग्राफ का, तो मैंने बताया था आपको कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ होगा और उसका हम मैट्रिक्स एनालिसिस करेंगे तो हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी V plus 2E, क्योंकि हम वहाँ पे हर नोड हर एज 2 बार काउंट कर रहे थे, बट यहाँ पे हम हर एज एक ही बार काउंट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of V plus E. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O of V होगी, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा विजिटेड एरे ले रहे हैं ऑफ साइज V इज रिक्वायर्ड. बेसिकली हम एरे का साइज एक V भी ले रहे हैं और बेसिकली हम एक स्टैक भी यूज करेंगे जिसका साइज भी वर्स्ट केस में V हो सकता है. सो दैट मेक्स इट O of 2V वेयर 2 इज कांस्टेंट. तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि O of V हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया. Okay, now let's quickly talk about the coding school tournament, that why wizard coding school tournament that is going to happen on 26th of Jan, and that whole contest tournament will be of 90 minutes. Students from class 8th to 12th can participate in this contest and you can win rewards up to 5 lakhs. Okay, what this tournament will have, basically it will have 2 coding questions which will be of 200 marks and 20 quiz questions which will be of 100 marks. Okay, so if you want the link for this tournament, the link will be in the description box. Okay, so you can just go and click on that link and you will be redirected to a Geeks4Geeks page where you can see about coding wizard school tournament. Okay, so top 100 students will be given reward. Not only top 5 or top 10 students will be given, top 100 students will be given the reward of 5 lakhs. Okay, now if you are confused that from where, like we still have 19 days left, so you have a lot of time, and if you're confused that from where you need to start practicing for this, then I will say you that please go on Geeks4Geeks school channel, subscribe there. We have multiple playlists, you can go and learn a lot of concepts for there. Let me just quickly tell you about the syllabus of this contest. So the syllabus of this contest is basic of programming, binary representation of number, loops and strings. Okay, and please students don't do any cheating because there will be a plagiarism check and there will be 5% penalty of every wrong submission also. Okay, and you can use C++, Java and Python, all these languages to for this tournament. Okay, and if you want to learn for this tournament, then students please go and check out our school guide course that we have launched. This is a free course just for you guys, and it has like a lot of content for class 1st to class 12th. So we have divided the content like this. If from class 1st to 4th we have computational thinking and with Scratch. Okay, you have a course of Scratch. For class 5th to 8th we have these 4 courses. You can see these 4 courses. You can go and learn these 4 courses if you are from class 5th to 8th, and if you are from class 9 to 12th, then you have C for beginners and Java for beginners in this course. This course is totally free for you guys. You have to not like you don't have to give any money. This pricing is 0. So you just can go and start registering for this course. Okay, and you can learn a lot of things, and don't worry, as the time goes by we are going to add a lot of different things in this course. We are going to add web development, we are going to add Python as well, so this will be of a really good help for you guys. Okay,
So that was all from my side, students. I hope that you guys have enjoyed this session and you guys have learned something. If you like the video, then please click on the like button and share it with your friends as much as you can. And if you have any suggestion for me, please write down in the comment section. I'll see you next time. Till then, take care. Bye bye everyone. Bye everyone. Bye.